know she like it 'cause हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमन और आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल एसजी। आज हम फिर से एक नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज मेरे पास एक छोटा सा टॉर्च आया जिसका बैटरी ख़राब हो चुका है। आज हम इसका बैटरी चेंज करेंगे। मेरे चैनल में जो नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड लाइक कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको खोल लेंगे, उसके बाद देखेंगे इसका बैटरी का प्रॉब्लम है या मेन सर्किट बोर्ड का प्रॉब्लम है। सर्किट बोर्ड तो मुझे इसका ठीक ही लग रहा है बैटरी ही ख़राब हो चुका है। ठीक है, हम बैटरी चेंज करते हैं। इसका रेड वायर प्लस है और ब्लैक वायर माइनस है। ये देखिए 3.7 वोल्ट 1200 mAh की बैटरी है। मेरे पास भी है, ये देखिए ये है 3.7 वोल्ट 1200 mAh की बैटरी है। मेरे पास और भी दूसरी बैटरी है जो 2200 mAh की है। मेरा 2200 mAh की बैटरी है, लेकिन इसमें 1200 mAh की बैटरी लगा हुआ है, इसीलिए हम 1200 mAh की बैटरी लगाएंगे इसमें। ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस है। देखिए ये 1200 mAh की बैटरी है, 3.7 वोल्ट की है। ये इसमें हम प्लस, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, चलिए हम इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं।
देखिए प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस जोड़ने से कैसे मेरा टॉर्च जलने लगा, मतलब एकदम कनेक्शन सही है। चलिए अब इसको हम अच्छी तरह से लगा देते हैं। Yeah.